दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे इस कॉमिक नरेशन में। पिछली बार बहुत मजा आया था, आज भी बहुत मजा आएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिकैप ले लेते हैं पिछली बार क्या हुआ था, एंड देन आज की नरेशन बहुत ही जल्दी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। सो ऑल ओवर टू सिनिस्पाई। तो हाँ, पिछला इशू जो था हमने देखा वो था स्टार ब्रांडेड से शुरुआत करी थी हमने पिछले नरेशन में। और स्टार ब्रांडेड में हमने देखा कि एक नया सुपर हीरो पैदा होता है इस यूनिवर्स में, जिसका नाम होता है स्टार ब्रांड। वो एक छोटा सा नॉर्मल सा लड़का होता है जो कि अपनी पूरी लाइफ इग्नोर हुआ रहता है। और एक कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद, जो कि वाइट इवेंट जिसका नाम दिया गया था। और व्हाइट इवेंट में एक बार और समझा देता हूँ कि व्हाइट इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके होने की वजह से दो कैरेक्टर्स का जन्म होता है। एक होता है नाइट मास्क, जो कि हम जानते हैं कि वो कौन है। आप लोगों ने अगर फॉलो किया हो तो आपको पता होगा। और दूसरा होता है स्टार ब्रांड, जो कि हम स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके हाथ में एक स्टार जैसा शेप का साइन बना होता है। और वो उस ब्लास्ट के क्रेटर के बीच में पड़ा होता है। वहां पे एवेंजर्स आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और वो घबरा जाता है। और ओवर कंट्रोल होने की वजह से वहां पर फिर एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उस लड़के की जो पावर होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो हल्क को स्पेस में फेंक देता है। उसके बाद, और ये कोई नॉर्मल हल्क नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल हल्क है। और इसको वो स्पेस में फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पर हिपेरियन, थॉर और सारे एवेंजर्स, इवन कैप्टन मार्वल और कैप्टन यूनिवर्स, इवन नाइट मास्क से भी वो ऑल इन फाइट करता है। मतलब सबके साथ अकेले फाइट करता है वो छोटा सा लड़का। और फिर भी वो सारे एवेंजर्स उसे प्रॉपरली कंटेन नहीं कर पाते। और ये सब खत्म होने के बाद भी वो लड़का कहता है कि वो अपनी पावर्स को वो फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज कर रहा था, यानी कि वो होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद भी वो इतना पावरफुल था कि वो इन सब से लड़ पा रहा था। उसके बाद कैप्टन यूनिवर्स जो है, वो नाइट मास्क को कहती है कि तुमने सॉरी नाइट मास्क यूनिवर्स कहती है कि क्या मैं ऐसा करूं। तो यूनिवर्स कैप्टन यूनिवर्स कहती है कि अगर तुम ये सब करते हो तो इसका नतीजा जो है, अगर तुम स्टार ब्रांड को बचाते हो तो इसका नतीजा जो है वो एक बॉक्स में ही मिलेगा तुम्हें। इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो तुम्हारे लिए एक बॉक्स होगा। तो फिर भी नाइट मास्क जो है वो स्टार ब्रांड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्टार ब्रांड जो है वो अभी एक नादान लड़का है और उसे ये सब के बारे में नहीं पता। तो वो थोड़ा सा बहक गया है और नाइट मास्क से बचा लेता है। उसे वो टेलीपोर्ट करा के कहीं और लेके जाता है। फिर हम देखते हैं वो जगह जहां पर वो उसे टेलीपोर्ट करके लेके जाता है वो होती है सुपर फ्लो। सुपर फ्लो के बारे में आपको बताया था मैंने पहले इश्यूज में कि सुपर फ्लो जो जगह होती है वो मल्टीवर्स के स्टेबिलिटी के लिए बनाई गई चीज, मतलब बनी हुई चीज है। और यहाँ पर ये जो मशीन गिरी हुई देख सकते हैं, ये बिल्डर्स की बनाई हुई एक कम्युनिकेशन, क्या कह सकते हैं उसे, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर एक सेंटर है, कम्युनिकेशन सेंटर है। ये यहाँ पर टूट चुका है। इसके टूटने की भी वजह जो है अभी हम लोगों को आगे पता चलेगी। उसके बाद नाइट मास्क यहाँ पर स्टार ब्रांड को कुछ कुछ चीजें बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका जन्म क्यों हुआ, क्या हुआ। उसे व्हाइट इवेंट के बारे में बताता है। उसके बाद उसे वो लेकर अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि कैप्टन यूनिवर्स जो है वो तमारा की बॉडी को लीव कर चुकी है, जिसके लिए कैप्टन कैप्टन अमेरिका कहता है कि उसके लिए हम लोग एक बंदे को जानते हैं, वो उसकी हेल्प करेगा। और वो बंदा हम जानते हैं कि शैंगची जो है, वो पहले से तमारा के साथ वो थेरेपी सेशंस वगैरह कर रहा था। तो प्रोबेबली शैंगची जो है वो तमारा की हेल्प करेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है वो नाइट मास्क को ट्रैक कर रहा होता है। और उसे पता चलता है कि नाइट मास्क जो है वो मार्स पे जा चुका है। तो फिर हम देखते हैं कि मार्स पे जो है वो नाइट मास्क स्टार ब्रांड को लेके पहुंच जाता है। वहां पर वो मिलता है एक्स निहिलो और एबिस से। एक्स निहिलो जो कि उसका डैड है होता है एक तरीके से, क्योंकि एक्स निहिलो ने ही नाइट मास्क को मतलब पैदा किया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इशू आता है स्टार ब्रांड। इस इशू में वहां से फिर वो कंटिन्यू होती है वो बातें जो एक्स निहिलो और नाइट मास्क करते हैं आपस में। यहाँ पर नाइट मास्क जो है वो हेल्प मांगने आया होता है एक्स निहिलो से कि उसकी हेल्प करिए स्टार ब्रांड को और नाइट मास्क की हेल्प करने के लिए। और एक्स निहिलो जो है, पहले तो यहाँ पे फाइट होती है एबिस के साथ, पर लास्ट में एक्स निहिलो बताता है कि वो इतने सारे सालों से इतने सारे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करके, इतने सारे यूनिवर्सेस को वो करके वो बोर हो चुका है। इसलिए इस बार जो अर्थ पे उसने स्टार्टिंग में हमने देखा था गार्डन वाले इश्यूज में कि कुछ बॉम्ब्स फेंके गए थे अर्थ पे, 6 बॉम्ब्स थे।
उसके बाद पता चला था कि वो नहीं, 7वां बॉम्ब भी था वहां पर। तो उन सातों बॉम्ब्स में एक्स निहिलो ने बोला कि हम सिर्फ ह्यूमंस को टेराफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब वो सिर्फ ह्यूमंस को टेराफॉर्म नहीं करना चाहता इस बार वो पूरे प्लेनेट को ही टेराफॉर्म करके एक कॉन्शियस बीइंग बनाना चाहता है। जैसे कि ईगो का प्लेनेट हम लोग जानते हैं कि एमसीयू में भी हमने देखा है कि ईगो का जो प्लेनेट होता है वो सेंटिएंट बीइंग होता है। तो यहाँ पर एक्स निहिलो ने जो बॉम्ब्स फेंके थे वो लिटरली एक सेंटिएंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो टेराफॉर्म कर रहे हैं अर्थ को एक लिविंग क्रिएचर बनाने में। फिर सारे हम लोग साइट्स देखते हैं कि वो धीरे धीरे थोड़ा से म्यूटेट हो रहे हैं, वो सारी साइट्स जहां पर वो बॉम्ब गिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक्स नेहिलो फिर यही सब अपने इविल प्लान्स और इविल थॉट्स बताता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार को पता चलता है कि नाइट मास्क जो है वो लोकल में, उसका जो है वो ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो लोकल में पिंग कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नाइट मास्क और स्टार ब्रांड जो है वो आ चुके हैं मतलब अर्थ पे। और यहाँ पर क्रोएशिया के अंदर जो एक बॉम्बिंग वाली साइट होती है जहां पर एक्सनीलो ने अपना एक बॉम्ब छोड़ा था, यहाँ पर कुछ ककून्स बने होते हैं। ये ककून्स में से कुछ क्रिएचर्स निकलते हैं, गुई टाइप के होते हैं, वो आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। पहले तो क्या बोलते हैं, स्टार ब्रांड को लगता है कि ये कोई वॉर्म सेक्स है, पर नहीं, ये वॉर्म सेक्स नहीं होता है। ये लोग आपस में वो चिपक के एक ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और जो कि बेसिकली आगे चल के अर्थ का ब्रेन बनने वाला था। पर यहाँ पर नाइट मास्क को इसमें वो जो क्रिएचर्स होते हैं वो खींचने लगते हैं। तो स्टार ब्रांड जो है वो नाइट मास्क की हेल्प करता है, और स्टार उसकी हेल्प करने के चक्कर में वो ओवर कंट्रोल हो जाता है, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो पूरे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर नाइट मास्क को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो कहता है कि हमने दुनिया को मार डाला, पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, अर्थ को। उसके बाद एवेंजर्स आते हैं, वो इन दोनों को इन चीजों का गुनहगार बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ी वो करी, आपदा लाई है। और फिर इन दोनों को क्रिमिनल्स की तरह पकड़ के ले जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक फाइट यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, वापस से आप देख सकते हो। पर एंडिंग यही यही मतलब एंड यही होता है जहां पर नाइट मास्क और स्टार ब्रांड जो है एक डब्बे में बंद होते हैं, एक बॉक्स, जैसा कि कैप्टन यूनिवर्स ने कहा था। और वो बॉक्स होता है सोल हैमर यानी डाइस स्फीयर, जो टोनी स्टार्क ने बनाया था यूनिवर्स के बाहर। और अब अगला इशू, वैलिडेटर। ओके, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। चल, वैलिडेटर। सो इस इशू में हम लोगों को देखने मिलेंगे कैप्टन अमेरिका, हल्क, वुल्वरीन, फैल्कन, मैनीफोल्ड और स्मैशर। Can we transport him back to the carrier? I'm worried about degradation. Regina, Saskatchewan, Canada. You should access it now, if you can. Okay. Why did you do it, Agent Michaud? What did you see in them? 8 hours ago. I apologize for the urgency, Captain. It couldn't be avoided. My hands are tied. I mean, we just found all these ourselves. The Avengers were part of the containment team that dealt with the fallout of the Guardians' attack on Earth. So you know that Kobe, Chhatarpur, Split, and the Fallen Heights all were and remain secured, quarantined. The other sites in Perth and Regina were handled by those countries' domestic agencies. All previous intelligence had pointed to them being under control, handled.
That was until now. What happened, Maria? Before we go any further, I want to stress that everything you are about to see remains classified by Department H, while we are coordinating with SHIELD and have agreed to let them call you in to assist regarding this matter. This is no way implies that we are yielding sovereignty, and in fact reserve the right to abort the mission at any time. I want to make sure we are all clear on that. Are we clear on that? License Porter, it, it is Porter, isn't it? Does it matter? License Porter, you called us. That we did. And thank you for coming, Captain. Show them the video, officer. Department H. Missions Logs 044399-97B. Event site Regina. Latitude 50 degrees 24 minutes. Longitude 104 degrees 37 minutes. Primary mission parameters secure event site. Tasking agents Wendigo 83-02-801225. Validator 91-07-237811. Kingdom 86-03-400901. Box BOXX05.01B. Expected threat level black. Full authorization given. Lethal force sanctioned. Engage Omega flight protocols. Mission clock 01. Mission logs begin 0824 UTC. Mission log. Engaging the event zone Regina. Mission clock 3 minutes and 38 seconds. Mission log. Biofilters engaged, heat signatures and biometrics all over the place. No recognizable life signs. Pre-event population of Regina 203975. Mission clock 23 minutes 50 seconds. Mission log. Non-indigenous superstructure surround city. Motion everywhere. Larger life forms staying clear. Bioluminescent organisms abundant. Mission clock 42 minutes 17 seconds. Mission log. Box unit had determined that numerous spots were the crystallis chambers. We believe we have discovered what happened to the civilian population of the city. We are going to attempt contact. Mission clock 1 hour 32 minutes and 6 seconds. Mission log. Box unit lost. Pressing on. Mission clock 2 hours 17 minutes 22 seconds. Mission log. Wendigo infected after attempting secondary contact with organisms. Mission failure. One last attempt to capture a specimen and then we are pulling out. Mission clock 2 hours 22 minutes and 17 seconds. Mission log. Dome closed. We are trapped in here. Mission clock 4 hours 9 minutes 0 seconds. Mission log. There's been an environmental change. Something's happening in the center of the city. Organisms becoming more hostile. We are being hunted. Mission clock 4 hours 11 minutes and 23 seconds. Kingdom Prime Terminal. Mission clock 4 hours 12 minutes and 51 seconds. Listen to me. This place. You have to destroy it. Mission clock 4 hours 13 minutes 18 seconds.
Whatever you do not come in here. Stay away! Stay out! This place is death! All communications with Omega Flight lost. Transmission ends. That was 1 month ago. And you waited this long to call? We spent the time trying every possible way we could to get in there, Falcon. Why don't you define every possible way? We tried cutting through the barrier with every device known to man. Then we moved on to more exotic solutions. Short range translocators, metahumans, field casters, magic. We even tried a low yield fission device. I'm sorry, Agent, but that can't be true. If you would have used a bomb, it would have shown up on early warning systems across this planet. And Canada doesn't have any nuclear weapons. No, Banner, they don't. But Agent God here has resources his government doesn't allow. Know about. C. Roberts, first generation Department H Special Ops. Old school. Hello, Logan. There still would have been a signature, or radiation, or any other. You dug a hole, didn't you, Agent McCord? Tried to blast your way into the dome from underneath? Which would have just shown up as abnormal seismic activity, right? An anomaly, okay? Canadians with nukes? Who would have ever imagined that? I did, and it didn't work. The dome wall extends all the way down, making a perfect sphere, and there wasn't the slightest crack. So that brings us to why you are here. We need up. I need your help. I need to get into the dome. You can do that. Can you do that? Well, the man asked you a question, Eden. Yeah, I can get us in there. There you have it, Agent Picard. All we need now is clearance. You've got it on one condition. I'm going with you. 1 hour later. Hangar's clear. You're good to go, Cap. Okay, Eden, take us in. This isn't right. Are you sure that we. Yes, this is where the plaza was on the map. We're exactly where you needed to be. This should be right outside the city. It. Look. Oh, wow. I'm going to get an airborne, Steve. Get some idea of which direction we. What makes you think that, Bruce?
No need. I think we should head that way. Well, it's the way he's pointing. What do you think? I want you to know that I'm gonna feel just awful flying away while the creepy yellow dude lure you into their trap and eat you. They'll try and say nice things about me at the funeral. Let's go. What is. Hey, I think something's moving in there. Yeah, look. My god. It's Validator. Did he see? Do you remember? Yes. Are you going to tell anyone what you saw? Can anyone make you? I don't have those kind of problems. How about you? I have a Series 6 recording implant. No audio, video only. Still, Department H is going to review it. Then they are going to ask questions. There, they are, Director Hill. Set a parameter? Better safe than sorry. Full containment, Lieutenant. Yes, sir. Robert, what did she say? Yeah, don't worry about it. Now, हाँ, तो इस इशू की शुरुआत में हमने कुछ बहुत ही मजेदार चीज देखी। एक नई जगह, एक ऐसा सीन जहां पर कुछ नए लोग दिखते हैं। यहाँ पर हमें दिखती है मारिया हिल और एक और शील्ड एजेंट। यहाँ पर हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि मरा हुआ है, उसके सर पे खून लगा हुआ है और ये दोनों एजेंट्स उसे एग्जामिन कर रहे हैं। उसके उसके सर में से कुछ निकालते हैं वो।
उसके बाद हमें पता चलता है 8 घंटे पहले क्या हुआ था। 8 घंटे पहले यहाँ पर एवेंजर्स आते हैं, मतलब हमारे कैप्टन अमेरिका और जो मैनीफोल्ड वुल्वरीन वाली जो टीम थी, जो कि मार्स पे गई थी एक टाइम पे। पिछले इश्यूज में हमने देखा था, गार्डियन वाले इशू में, कि वो लोग मार्स पे गए थे, फाइट किया था, उन लोगों को पता है उन साइट्स के बारे में। वो लोग मिलते हैं कैनेडियन एवेंजर्स यानी कि अल्फा फ्लाइट से। ये अल्फा फ्लाइट की टीम है जो कि शील्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ पर एवेंजर्स अपने क्विंजेट से आते हैं हेली कैरियर पे और आपस में बात करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो सारी साइट्स थी, वो सारी साइट्स कंटेन कर ली गई हैं, जिनमें से 7 साइट में से 5 साइट की जो क्या बोलते हैं उसे, ऑथराइजेशन है, वो शील्ड के अंडर है। जिसमें से बाकी जो 2 हैं, हमें बताया जाता है पर्थ और रजीना, उन दोनों को जो है वो वहां के डोमेस्टिक जो एजेंसीज हैं उन लोग कंटेन कर रहे हैं। जिसमें से रजीना जो है वो आई थिंक कनाडा का पार्ट है, आई एम नॉट श्योर। तो रजीना वाले साइट पे कैनेडियन एवेंजर्स की ऑथराइजेशन होती है, तो वो लोग वहां पर जाते हैं। और ये चीज हमें पता चलती है यहाँ पर जो बातचीत होती है उसके द्वारा। हमें बताया जाता है कि हाँ, ये सब हुआ 1 महीने पहले। ये एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कैनेडियन एवेंजर्स की टीम यानी कि अल्फा फ्लाइट, जिसमें होते हैं वेंडिगो, वैलिडेटर, किंगडम, बॉक्स और आई थिंक 4 ही थे, 1 2 3 4, हाँ, ये 4 लोग जाते हैं उस साइट पे, रजीना वाली साइट पे, जहां पर वो बॉम्ब गिरा था और वो जगह म्यूटेट हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो म्यूटेट हो रहा है। तो वहां पर एक तो हमने देख लिया कि वो ब्रेन बना था, ककून वाला पार्ट, जो कि क्रोएशिया में हुआ था। फिर अब हम यहाँ रजीना वाली साइट पे देखते हैं कि क्या म्यूटेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सारे एवेंजर्स वहां घुसते हैं, अल्फा फ्लाइट की टीम जब वहां पे घुसती है, तो वहां पर देखते हैं कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और ये बहुत सारे वाइन्स होते हैं वहां पे। जिसमें से आधे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इन सभी मेंबर्स में से सभी मेंबर्स जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक। ये जाल ऊपर से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद ये सभी वहां पर मर जाते हैं। हमें आखिरी सीन दिखाया जाता है कि वैलिडेटर जो होती है वो वहां अपने एक टेक वाले ड्रोन से उन लोगों को सिग्नल भेजती है कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। और लास्ट में वो जो है ये सब बोलते हुए ये ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, ये वीडियो बंद हो जाती है। और यहाँ पर फिर बताया जाता है कि ये जो चीज हुई है वो हुई है 1 महीने पहले। उसके बाद ये सभी लोग कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैनीफोल्ड से के कैप्टन पूछते हैं कि तुम हमें वहां ले जा सकते हो और वहां से बाहर निकाल सकते हो। मैनीफोल्ड कहता है कि यस, मैं टेलीपोर्ट करा सकता हूँ तुम लोगों को। फिर ये सारे लोग यानी कि शील्ड, कैनेडियन अल्फा फ्लाइट के और मेंबर्स, कैनेडियन शील्ड के और मेंबर्स, और ये सारे एवेंजर्स वहां पर जाते हैं उस साइट के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। और वहां पर जाते ही वो बहुत खूबसूरत नजारा देखते हैं। और यहाँ पर उन्हें एक डॉबी जैसा छोटा सा कैरेक्टर, जैसा कि किंग्समैन ने बड़ी फनी आवाज निकाल के बताया हम लोगों को कि ये जो कैरेक्टर है ये इन लोगों को रास्ता दिखाता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं वहां पे। फिर ये सब उन लोगों को लेके जाते हैं और वहां पर बीच में उन्हें कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। और उस रोशनी के बीच में से वो वैलिडेटर जो कि अल्फा फ्लाइट की मेंबर थी, वो यहाँ पर निकलती है। वो यहाँ पर मरी नहीं होती, वो यहाँ से निकलती है, लेकिन वो वैलिडेटर नहीं होती, वो अंदर से कुछ और बन चुकी होती है। और फिर वो वही भाषा बोलती है जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो एडम बोलता है, जो ये क्रिएचर्स बोल रहे होते हैं, यानी कि एक्स निहिलो वाली भाषा। और उस भाषा में वो इस पर्सन के कान में कुछ कहती है। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ पता ही नहीं जाता कि यहाँ पर हुआ क्या है, जो कि हम लोगों को आगे पता चलेगा। यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन होती है और फिर ये सारे एवेंजर्स थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ से, यहाँ पर जब इनका एग्जिट पॉइंट आता है तो यहाँ पर कैप्टन और वो इंसान बात करते हैं कि जो भी हम लोगों ने देखा क्या हम वो बताएंगे इन लोगों को। यानी कि कुछ तो इन्होंने बहुत सीक्रेट और यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज देखी है जो यहाँ पे ये लोग बताना नहीं चाहते इन लोगों को। पर इस पर्सन के अंदर एक इम्प्लांट लगा हुआ है जिसमें ऑडियो तो नहीं है पर वीडियो जरूर है। तो ये पर्सन सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जिसके बाद
जहाँ पर जैसे ही मारिया हिल पहुँचती है और उस इंसान को पता था कि ये लोग वो वीडियो निकाल लेंगे, इस वजह से वो पर्सन अपने दिमाग पर गोली मार लेता अपने सर पे और वो मर जाता है। और फिर ये वही सीन है जो हमने इस इश्यू के पहले पेज पे देखा था, जहाँ पर ये इंसान मरा होता है और इसके दिमाग में से वो इम्प्लांट निकाला जाता है। उसके बाद Now, नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, नहीं नहीं, हमने ये पढ़ा पढ़ना ना। है। अच्छा, ये पढ़ना है। हम्म, ये, अरे सॉरी। हम्म। Now, as agreed upon, what you have just seen concludes all recorded missions data from the beginning of the operation until Agent McCord took his life. Exactly 49 minutes. That's what we found on his clip, on his chip. What did you get from debriefing the Avengers? Nothing. They all said they couldn't remember much of what happened. They jumped into what should have been a city and found a forest. Then it was just gone. That's it. Do you believe them? No. I think they were holding something back. But they have left, and I am not much for chasing here. You find this acceptable, Director Hill? Which part? The leaving or the not telling? Them leaving. Well, Hulk and the holding back of the information. They don't completely trust us, and we make a habit of giving them a good reason not to. We lie to them, so they withhold from us. It's baked into the relationship. But since you are the manifestation of good all fashioned honesty, why don't you tell me what you are not telling me? Excuse me, you're fishing? Now give Agent Porter. Load the additional footage. One of our techs had the bright idea of looking up all Series 6 records on file for Agent McCord, including the data check performed before the mission began. We compared that dataset with what we pulled from this corpse. It should have yielded an increase of around 49 minutes. We found more. How much more? What's happening? 327 hours? Evolving. Uh, Adapting. Where was it? The extra footage? The extra time? Everywhere. Some of it was 30 years ago. Some of it decades into the future. The effects appear to be variable, specific to each of them. What we are interested in is coming up now. Please stop! Series 6 chips gather data from both eyes, so we are able to map the informant and pull back and around from the agent to get a better look at what is happening. There, see?
She pulls him close, drawing him in, and then nothing. Nothing happened. Don't be ridiculous, Agent. Isn't it obvious? She was telling him something. I think we should talk about it. Is that okay? No, not really. Seriously, I have questions, a ton of them. Like, what just happened? Right. And why did we lie to the shield? I mean, they. Like, are we not on the same team anymore? And the big one, why did that agent shoot himself? Yeah, that. He did what he thought he had to do. He did what someone does when keeping a secret is worth more than their life. I don't understand. Why would he do that? Because whatever Validator became, it used to be his daughter. Please, stop! And whatever her secret was, he decided it was worth his life to protect it. Father, something amazing has happened here. It's happened to me. पानी पी ले भाई, नहीं तो किडनी की मार आ जाएगी। We have made something, and I'm supposed to protect it. It's bigger than any of us ever imagined. Father, this system is now online. तो हाँ, उसके आगे फिर हमने देखा कि यहाँ पर मारिया हिल कैनेडियन जो शील्ड है, जो मेंबर्स हैं, उनमें से उनके लीडर जो कि उसका नाम होता है पोर्टर, उससे बात करती है। और यहाँ पर पोर्टर जो है वो बोलता है कि उसे समथिंग कुछ आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो मिली है उसके दिमाग से, उसके ब्रेन से, वो जो चिप निकाली गई थी उससे। मारिया हिल से वो पूछता है कि क्या एवेंजर्स ने कुछ बताया, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था कि कैप्टन जो है वो डिस्कस करते हैं एजेंट मिकॉर्ड यानी कि इस बंदे से कि वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे मारिया हिल बताती है कि किसी भी एवेंजर्स ने नहीं, कुछ नहीं बताया। पर मारिया हिल के इंसिस्ट करने के बाद यहाँ पर एजेंट पोर्टर जो है वो फिर रिवील करता है कि हाँ, उसमें से उन्हें आगे की फुटेज मिली थी और वो फुटेज बहुत बड़ी थी और उस फुटेज में 327 घंटे की वो फुटेज थी, यानी कि 327 घंटे की फुटेज। वो सभी लोग उस जगह के अंदर जब थे तो 327 घंटे वो उस जगह के अंदर थे। और वहां पर हम अंदर देख सकते हैं कि हर एवेंजर यहाँ पर जो है वो अपने पास्ट, फ्यूचर, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये उनका वेरिएंट हो मल्टीवर्स का, और वो सभी मॉर्फ होते हैं अपने अपने वेरिएंट के शेप्स में। यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में हम हल्क को देख सकते हैं, नीचे फैल्कन को देख सकते हैं, और वुल्वरीन का यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होता, मैनीफोल्ड का यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होता। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे वेरिएबल है सबका जो चेंज होता है,
कैप्टन अमेरिका के 3 अलग-अलग वो दिखाए जाते हैं सूट्स, जिससे मैं ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये वेरिएंट है, ना कि फ्यूचर और पास्ट। उसके बाद यहाँ पर हाँ, फिर यहाँ पे बताया जाता है कि आगे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पर फिर जब एवेंजर्स वापस लौट रहे होते हैं ये सारा मिशन करके, तो यहाँ पर मैनीफोल्ड जो है वो कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सब क्या था और हम सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब वुल्वरीन बताता है कि जो भी वैलिडेटर, यानी कि वो लड़की जो वहां पर पाई गई थी, वो जो बन चुकी थी, वो अब उसकी बेटी नहीं थी। यानी कि यहाँ पे रिवील होता है कि एजेंट मैकॉर्ड की बेटी थी ये वैलिडेटर, और वो उसके कान में कुछ कहती है, जो कि पहले हम लोगों को ब्लर तरीके से दिखाया गया था, पर यहाँ पर क्लियरली दिखाया जाता है कि वो कहती है द सिस्टम इज नाउ ऑनलाइन। ये जो सिस्टम की बात हो रही है, ये सिस्टम वर्ड कई बार यूज हो चुका है पहले के इश्यूज में। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम एक ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ऑर्गेनाइज करने वाला एक इंसान है, और वो है राबुम अलाल। राबुम अलाल के बारे में, इसी सिस्टम के बारे में ब्लैक स्वान भी कहती है स्टार्टिंग में कि राबुम अलाल का जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर वही सीन प्ले आउट होता है। यहाँ पर वो वैलिडेटर जो है वो बताती है कि यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीजें हुई है, ये हम लोगों की लाइफ से बहुत बड़ा है, और हम लोगों ने जो सोचा है ये उससे ही बहुत बड़ा है। तो अब पता नहीं ये वैलिडेटर रियल है या फिर बस एक भ्रम है या फिर क्या है, बट यहाँ पर किसी सिस्टम की बात हो रही है, और यहाँ पर एक डार्क मैजिक जैसा कुछ तो रूइन बन जाता है जमीन पर इन सबके एंड होने के बाद। अब आगे Wake the Dragon. सो इस इशू में हमको देखने मिलेंगे ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल, स्पाइडर वुमन, शांची, सनस्पॉट और कैनन। Using recently formed back channels developed on the UN Human Rights Council, the AIM Island nation state has recently opened bidding on the prototypes of their next generation bioweapons. The design, payload, and yield of the weapon remains a highly guarded secret, so much so we currently only know two things: what the prototype is called, S7, and where the sale is going to happen. You'll fly into Hong Kong on a Da Costa corporate jet, then take the ferry over to Macau. Dress your very best, Avengers, and I hope you're feeling lucky. It's time to gamble. Your mission has four primary objectives. 1. Secure the weapon by any means necessary. 2. Infiltrate the AIM agents, win their trust. 3. Identify all possible buyers. And lastly, at all costs, maintain a low profile. The last thing SHIELD wants is an international incident. I am calm in a raging sea. Tradition that butters us the future.
I am the old ways from which we came. There is a newborn beast in the ocean of global megacorporations. Chimera! It is a serpent posing as a dragon, something wicked pretending to be something noble. Chimera is here for the bidding. I am here because the universe demanded it. So I have seen them, and they have seen me. And that's all there is to it. 4 hours ago. Here you go, sir. And these arrived this morning. By courier, sir. Cool. Thanks, pal. Okay, let's get started. The AIM negotiating party is led by Dr. Matthias Dietz. We know for sure that the Circle are here from Madripoor as well as Simkarian separatist and the Moldovan Black faction. There's also talk of a local Hong Kong group. Triad? Nope. Something new, we think. Anyway, the point is, everything resolves around the weapons AIM is selling. So I'll engage Dr. Deeds in the hope of securing the weapons tech. Bobby and Sam will work the secondary AIM agents, while Jess, Natasha, and Shang-Chi scope out the buyers. Any questions? Seems overly complicated, doesn't it? How do you mean? Your plan has a lot of moving parts for a simple data extraction. Wouldn't it be easier if I seduced Deeds, brought him back here, and then pulled his fingernails out one by one until he gives up what we want? What is wrong with you, lady? Nothing. Because after we get that information, I'll shoot him in the head. We throw the body in the ocean, and then we drink and behave very badly in the morning. Okay, warming up to this plan. How about you, Sam? No, scary. Uh, and how does a screaming torture victim sync up with keeping a low profile, Natasha? Well, stick a sock in his mouth. Then how is he going to tell us what he knows? We'll take the sock out. Then what about the screaming? Then we stick the sock back. Oh my god! Are the two of you really doing the rendition version of Who's on First? Stick to the plan. We head down to the casino in an hour. Watch out for surprises. Now,
The gentleman has two pair, kings and eights. The lady has a set of queens. Set of queens wins. I swear I'm having the time of my life. How about you? A controlled descent is still falling, dear. Unacceptable for someone used to flying. Well, it could be you're playing the wrong game against the wrong person. Or maybe you are just a penguin. Oh, I think the one, the only one pretending they are something they are not is you, Miss Denvers. Or would you prefer Captain Marvel? Avenger? That would depend on how formally you want to keep this, Doctor. Because if you can call you Matthias, then you can call me Carol. Now, even after I'm taking the precautions of alerting all my agents to the existence of this charade. Why am I beginning to think I'm the potential victim of a rather elaborate scheme, Carol? After all, what are the chances of any of this just happening? You are asking me for odds, Doctor? I'm asking if you came all this way just to spend the evening with me. Or do I have something you want? Want implies I might not get what I am after. So you expect me to just give it to you? Well, I could always play you for it. Chimera. It finds profit in chaos. It globalizes violence. It monetizes death. Chimera's corporate slogan is progress. Hot dice are mighty nice. Winner, winner, woo! That will be quite enough shenanigans from the two of you. Now, as we are a semi covert terror state, we would very much like to avoid the appearance of a scene, Mr. DaCosta. So perhaps I could convince you and Mr. Guthrie to tell us take this outside. Oh, come on, guys. We're having fun here. Why, today, what, what we are going to be doing tomorrow, and and the day after that. I mean, sure, we came ready to dance. Show them, Sam. Boom! But really, are you in that much of a rush to get beat down? Overconfidence is a hallmark of the intellectually stunted, and we are more than prepared to take our chance. Actually, I kind of like the sound of this. I can't even remember the last time I had a vacation. Loyalty is its own reward, Travis. Shut up, dog. Daddy wants to party. Okay, we are in, boys. One night only. Gambling, bad behavior, and detente. Alright, but if you mean it,
we are gonna need to hear two magic words. Ready, please? Nope. Try again. Avengers assemble. So, this is a very nice room. Only the very best will do for captains of industries such as ourselves. Yes. No, but I asked, but you never actually told me what it was that you do. You said something about being here for a business deal? Yes, it's something like that. We're all with separate organizations that happen to share a common goal, and also all men of means with a taste for the very finest things, which explains the room and the company we prefer to keep. I am calm in a raging sea. I am tradition that buttresses the future. I have changed in a new environment. I have adapted. Have you thought about weapons? I look back at who I was and understand who I have become. And just like that, the tables, as they say, have turned. You're almost out of money, dear, and look how big my stack has grown. It's my superpower. Keep talking, and I'll show you mine. No need to get testy. We are all friends here. I don't want you walking away feeling like our little rendezvous this evening was all give and no take. How about if I promise to answer one question of yours honestly, if you are willing to do the same? Deal? Deal. Ladies first. I want to know who you are going to sell the S7 to. No one. What? I'm not here in Hong Kong to sell deer. I'm buying. You've got to be kidding me. You're here to buy something? Swear to God. Really? Really? Then what's up with the global criminal convention going on in the casino? Don't tell him anything. And I demand you unite me now or I'm going to report you. Shut up, dog. We don't know what Dr. Reist is up to. They never let us know anything. Sam, can I tell you something? Sure, Travis, whatever you want. This is the most fun I have had in really, really long time. Seriously, thank you guys. I wish it didn't have to end. Oh, it doesn't. Come work for me. Be my personal supervillain, double agents. It pays well. I'm rich, baby. Rich. Really? Really? Hey, means it. He means it. Guys, if you want in, just say yes. Yes! Uh huh, me too. But if we do this,
That means we are going to have to do something about duh. Huh? Shield data file. Name Danga Bautista. Affiliation The Circle. Event Church bombing, Manila, Philippines. Casualties 245 dead, 345 injured. Name Andri Ardilin. Affiliation Simkarian Separatist. Event IMF World Bank retreat bombing, Timisoara, Romania. Casualties 125 dead. Name David and Jonathan Pasek. Affiliation Black Faction. Event UNHRC nerve gas attack, Bangalore, India. Casualties 700 dead. Unnecessary! Unnecessary! Well, Jessica, I'm sorry, but I disagree. I am calm in a raging sea. I am the old ways from which we came. Chimera is something wicked pretending to be something noble. It is a serpent, but I am the dragon. So, my turn to ask a question. Go on. Well, it seems to me that there is absolutely no good end to the global superhero policing beat. I mean, take our situation here, for example. There's one of you and plenty of us. You people and your speeches. Fine. My question. How lonely of a job is it? Do you like always being alone? Actually, I've made quite a few acquaintances over the years. I have a little black book. Really? Uh huh. Full of names. Mostly men. A few women. Really? Yeah. It's a list of everyone I'm going to beat the hell out of first chance I get. And now, you are number one, pal. With a bullet. आई थिंक यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूँ फिर आज का इतने रखते 1 घंटा हो गया ये लास्ट पेज है ये कर लो अच्छा लास्ट पेज है ओके later all that we found out all that and we found out nothing actually I learned a few of those aim dudes can seriously drink and we also learned I should have used well the pliers right so nothing actually that's not true I found out exactly why they were here and what they were buying. An army of assassins. It seems our friends at AIM are gearing up for war. तो हाँ ये वाला इशू एक सब प्लॉट था जो कि हमें एंड में रिवील हुआ कि ये क्या था यस तो यहां पर स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका जो है वो ब्रीफ करते हैं कुछ एवेंजर्स को वो एक जगह भेजते हैं एक मिशन पे मकाओ में एक कसिनो है जहां पर इन सभी एजेंट्स को सॉरी यहाँ इन सभी एवेंजर्स को जाना है
शैंग-ची, स्पाइडर वुमन और कैप्टन मार्वल, ब्लैक विडो, सनस्पॉट और कैनन बॉल। ये लोग जाते हैं एक मिशन पे कैसीनो में, जहां पर अलग-अलग पार्टीज होती हैं जो कि एक कन्वेंशन में आए हुए हैं कुछ बेचने के लिए, सॉरी कुछ खरीदने के लिए। और यहाँ पर माथियास डीड्स करके एक बंदा है जो कि एक वेपन बेचने वाला है, उसका नाम होता है S7। ये होती है कैप्टन अमेरिका की इंटेल। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैंग-ची जो है वो एक किमेरा नाम के बंदे से लड़ रहा है और वहां पर कुछ असैसिन्स हैं। फिर हमें पता चलता है कि 4 घंटे पहले ये लोग जब यहाँ मकाओ में पहुंचे तो इन लोगों ने अपना प्लान बनाया कि करना क्या है। नताशा का प्लान यही होता है कि वो सबको मार देगी। पहले सबसे बड़े ही ग्रुप तरीके से वो सवाल पूछेगी, फिर सबको मार देगी। पर यहाँ पर एक लो प्रोफाइल रखनी थी इन लोगों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे चल के अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पर अलग अलग टीम जाती है, जैसे कि कैरल कैरल बात करती है माथियास डीड से, उसके साथ वो एक गेम खेलती है। शैंग-ची जो है वो असैसिन से फाइट करता है। सनस्पॉट और कैनन बॉल जो होते हैं वो एम के बंदों के साथ पार्टी करते हैं। जेसिका यानी कि स्पाइडर वुमन और नताशा जो है वो कुछ बड़े कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स के साथ जो है वो यहाँ पर एक कमरे में जाती हैं, उन्हें सेड्यूस करती हैं। यहाँ पर रिवील होता है शैंग-ची अपना नंचक्स निकालता है और फिर वही सीन प्ले आउट होता है। ये तो मेरे लिए सिनेमा था। वही सीन प्ले आउट होता है जब स्टार्टिंग में हमने देखा था टोनी स्टार्क वेपन्स बिल्ड कर रहा था शैंग-ची के लिए, और फिर ये नंचक्स में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर होती है, वो निकलती है और फिर वो उससे फाइट करता है उन निंजा से। यहाँ पर कैप्टन मार्वल जो है एंड एक चीज और वो बोलूं, उससे, हाँ बोलो बोलो। अगर नोटिस करूं तो ननचक्स में लिखा है रेजिलियंस, वो ऊपर वाला पैनल देखो, ननचक्स में रेजिलियंस हाँ वो लिखा है। स्टार्क इंडस्ट्रीज का वो है। हाँ। वो जब यहाँ पे इस वाले पैनल में शैंग-ची जो यहाँ पे बॉक्स खोलता है, ये वाले पैनल में ये जो यहाँ पे बॉक्स खोल रहा है नीचे, यस। वो वही वही नंचक्स निकालता है वो अपना। और यहाँ पर वही डिलीवरी हो रही है, वो जो डिलीवरी होती है ना यहाँ पे, हाँ। ये डिलीवरी उसी नंचक्स की होती है। सबको सबके वेपन्स दिए जाते हैं। यहाँ पे नताशा अपने वेपन्स देख रही है। और इसके बाद कैप्टन मार्वल जो है वो माथियास डीड से बात करती है। यहाँ पे वो रिवील करता है कि मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया, बल्कि यहाँ पे खरीदने आया हूँ। और फिर यहाँ पर सेम चीज जो है ये एम के बंदे भी कहते हैं, सनस्पॉट और कैनन बॉल से। और एम के बंदे अपने मालिक को डिच कर देते हैं और यहाँ पर सनस्पॉट के लिए काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि नताशा ने इन सभी क्रिमिनल्स को मार दिया है, और ये सभी के सभी जो क्रिमिनल्स थे वो शील्ड डेटाबेस में सबसे हाई लेवल, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे क्रिमिनल के उसमें थे, लिस्टेड थे। और नताशा की कुछ आई थिंक पर्सनल वो थी, इन वेंडेटा था इन लोगों से, इसलिए वो इन लोगों को मार देती है जानबूझ के। यहाँ पे स्पाइडर वुमन इस चीज का विरोध करती है, लेकिन नताशा तो नताशा ही है। और फिर शैंग-ची जो है इन सभी असैसिन से फाइट करता है। वो बार बार अपनी एक स्लोगन को चैंट करता है जिसमें वो कहता है कि आई एम काम इन अ रेजिंग सी, आई एम द ओल्ड वेज फ्रॉम द विच वी केम। और यहाँ पे स्टार्टिंग में वो बोलता है कि किमेरा इज समथिंग which pretends to be a dragon but he's a serpent। यहाँ पर लास्ट ये जो फ्रेम हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये पैनल में हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो अपने डायलॉग को चेंज करता है और कहता है कि किमेरा इज समथिंग विकेड pretending to be something noble, it is a serpent but I am the dragon। और यहाँ पर वो उससे फाइट करता है। फिर कैप्टन मार्वल जो है वो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि वो मारने वाली है माथियास डीड्स को, एंड देन कट टू द एग्जिट। ये मिशन यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं हो पाया पूरी तरीके से, क्योंकि मिशन वो था ही नहीं जो ये लोग सोचे गए थे। बट शैंग-ची ने इंटेल निकाली। शैंग-ची समझ गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और शैंग-ची इन लोगों से बताता है कि वो कुछ बेचने तो नहीं आए थे, पर वो खरीदने जरूर आए थे। और वो क्या खरीदने आए थे? वो थी एक आर्मी ऑफ असैसिन। एम प्लान कर रही है एक वॉर पे लड़ने के लिए, एक वॉर पे जाने के लिए, और उसके लिए वो रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर किमेरा का हेलमेट जो है वो यहाँ टेबल पे रखा होता है, यानी कि शैंग-ची ने किमेरा को मार दिया है। तो अब अगला इशू जो होगा वो हम कल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और अगला इशू होने वाला है इवॉल्व। ये आप देख सकते हो इसमें थॉर और हाइपेरियन बने हैं, तो कल का इशू जो हो सकता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो कहूंगा कि सब रहे सभी लोग, और कल का इशू ना मिस करें, क्योंकि कल शायद सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई तो सिनेमा यही था था हमारा आज आज का। वाला, तो सिनेमा था आज वाला, तो हाँ मजा आ गया।
हाँ, तो चलो अब आउटर दे एक दो। छोटा सा आउटरो हाँ, दे देता हूँ। भाई, आप लोग अगर अभी तक बने हुए हो तो इसका मतलब है कि आपको जो भी हम लोग ये कर रहे हैं ये बहुत पसंद आ रहा है। और इसका ये मतलब भी है कि भाई जो कल आने वाला है ना, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत मज़ा आता जा रहा है, सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल सिनेमा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सिनेमा। तो भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये पूरा कारनामा देखने के लिए हमारे साथ। और मिलते हैं दोबारा अगले किसी एक ऐसे ही कॉमिक नरेशन पैनल में, जहाँ पर कि हम इवॉल्व पढ़ेंगे मोस्टली। तो बाय बाय एंड थैंक यू।